Assalamu alaikum viewers, it's my third session, and in this session we will discuss about the units that we studied in last session. So in this session the first question is about the consistency, the homogeneity of the equations and how to use that concept to drive a unit. So in this situation, the specific heat capacity, which is generally denoted by small c, the equation is given as Bt raised to power q, where T is the temperature and C is the specific heat capacity. And in this particular situation, the units for specific heat capacity are given, that is joules per kilogram per Kelvin, while the unit for temperature is Kelvin. What we need unit for B, we need the unit for constant. So in this equation, when we are solving this, what we are supposed to do, SI unit of B, make B subject. What you get SI unit of C upon T cube. It's a very simple one. So now place the units of C and place the units of temperature. You get the unit for B. It's a simple one. So the unit for C was joules per kilogram per Kelvin upon Kelvin cube. So now what we will do, we'll see those options, and those options are in base units, SI base units. So I need to break that joules as well. We know that joules is kilogram meter square per second square, kilogram inverse, kilogram upon, Kelvin upon Kelvin cube. Now you can easily simplify this one. This kg and this kg are cancelled out. Okay, when this k power 3 goes upward, the power becomes negative. This will become k minus 4. Okay, so k minus 4 are these two, and kg is being cancelled out. Kg is being cancelled out. That means the D option contains kg. So we'll simply cut this. The answer would be B. No need to simplify this one. Just think logically. What I did, I worked out that Kelvin. That Kelvin proved to be k power minus 4. So these two options A and C are straight away incorrect. What I got two options. One was B, one was D. Then I think about the Kelvin, kilograms, and the kilograms are being cancelled. The power over here is 1 plus 1. The power over here is minus 1. These are cancelled out. What is left? Meter square S minus 2 K minus 4. No need to simplify further. Just think about it logically. I hope you got my point. If you pause it and attempt it to simplify or to understand my concept. Okay, now the next one. So which unit is equivalent to the coulombs? This is a question from past paper somewhere in some university. That question was there, I think GIK or NUST. So equivalent of coulombs. We know coulomb is the unit for charge, and the equation for charge is Q is equals to IT. Coulomb, ampere, this is second, ampere into second. So we have to look for ampere into second if we are looking for base unit. Now pause it, take 1 or 2 minutes and attempt it. Then check whether you have done correctly or not. Okay? So now check after pausing that. I hope you have solved this one.
तो फर्स्ट ऑप्शन इज एम्पियर पर सेकेंड. The second option is joules per volt, and third option is watt per ampere, and fourth option is watt per volt. So I am breaking this one, joules per volt. Volt, P is equals to VI. Watt per ampere is volt. So watt per ampere, C option is incorrect. Volt got a unit of watt per ampere, so C option is incorrect. Now think about this one, watts per volt. Watts per volt is ampere, P is equals to VI. Watt, volt and ampere. So watt per volt is equal to ampere. So this option is incorrect as well. Now we'll think about these two options. This is ampere upon second. This one is incorrect as well. This should be ampere into second. So what's the answer? The answer would be B. मैंने इसको कोई ब्रेक नहीं किया, मैंने इसको लॉजिकली सोचा है, कोई इसको अटेम्प्ट सॉल्व करने की कोशिश नहीं की है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की एक इक्वेशन पावर की यूज की है, जो जनरली मैं आपको एडवाइस करूंगा. व्हेन एवर यू आर यूजिंग द यूनिट्स, आइडेंटिफाइंग द यूनिट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, द equation which is generally used is V is equals to IR, and the second equation is P is equals to VI. Nothing else. No need to solve any other equation. So over here, it's joules per volt. I hope you got my point. Okay? ठीक है बेटा. अब next question की तरफ आते हैं. Shows a quantity and an incorrect unit. This is called distractor question. Distracts you. What generally student do, जब वो एग्जाम में बैठे होते हैं, बेटा एग्जाम का बहुत प्रेशर होता है, तो नॉर्मली वो ये जो इनकरेक्ट का वर्ड है वो आइडेंटिफाई नहीं करते, वो स्किम रीड कर जाते हैं, वो करेक्ट को ढूंढते हैं और उसके बाद वो कहते हैं यार इसमें तो बहुत सारी चीज़ें करेक्ट हैं, पता नहीं क्या क्वेश्चन आया हुआ. दैट टेक्स टाइम, ये टाइम कंज्यूम कराता है. तो अगर आप सोचें एफिशिएंसी, क्या इसका कोई यूनिट होता है? कोई यूनिट नहीं होता. इसका मतलब जो उसने क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज इनकरेक्ट. फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, m is equals to F into D. This is Newton into meter. What is written over here? Newton per meter. That means the quantity is here and incorrect unit is here. If you think about momentum, P is equals to mv. तो momentum का unit है Newton into second. This one is incorrect as well. Work done got a unit of joules. तो इसमें इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर बना B, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें क्वांटिटी और उसका यूनिट जो गलत है वो ढूंढना है, करेक्ट यूनिट नहीं ढूंढना, इनकरेक्ट यूनिट ढूंढना है. तो ये डिस्ट्रैक्टर क्वेश्चन होता है एग्जाम के. हालांकि कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, वहां पे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को, तो उस वक्त आप इतने प्रेशर में होते हैं कि ये इनकरेक्ट आपको करेक्ट नजर आ रहा होता है. तो ये जनरली एक वहां पर एरर होती है. तो यहां पर जो मैं मैसेज आपको कन्वे कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है पैशन के साथ. देखें एग्जामिनेशन में जितने लोग भी जाकर एंट्री टेस्ट के लिए अपेयर होंगे वो या तो इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनने के लिए ही जा रहे होते हैं. वहां पर सिलेक्शन किनका होता है? सिलेक्शन उन स्टूडेंट्स का होता है जो अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हैं, जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, जो शेकी कॉन्सेप्ट्स के साथ नहीं जाते. तो जितना हमेशा जिंदगी का एक रूल याद रखिएगा कि ऑलवेज वर्क फॉर क्वालिटी, नॉट फॉर क्वांटिटी. यानी अगर एक स्टूडेंट है उसने 20 चैप्टर्स पढ़े हैं पूरे एंड ही इज अनएबल टू अटेम्प्ट अ सिंगल क्वेश्चन, तो उसके 20 चैप्टर पढ़ने का बेटा क्या फायदा हुआ?
उसके कंपैरिजन में अगर एक स्टूडेंट है जो 10 चैप्टर पढ़ के जाता है और वो आधे सवाल ठीक करके आता है, तो किसका सिलेक्शन होना चाहिए? जो 10 चैप्टर पढ़ के गया है। तो हमेशा याद रखना है, क्वालिटी ऑलवेज विंस। क्वांटिटी कभी भी नहीं जीतती, क्वालिटी जीतती है। ठीक है, एंट्री टेस्ट का ये रूल याद रखना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which expression has the same SI base units as pressure? अब pressure की इक्वेशन याद करें। Pressure is perpendicular force acting per unit area. जो एरिया, जो सरफेस अंडर कंसिडरेशन है, उससे परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रही है उसको आप कंसीडर करते हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया। अब इसमें बेटा आप अगर सोचें तो आपके पास यहाँ पर लेंथ इंटू स्पीड आ रहा है, यहाँ पर लेंथ इंटू टाइम आ रहा है, यहाँ लेंथ इंटू टाइम स्क्वायर आ रहा है। अब आपको 1 बाय 1 सबके यूनिट्स को सोचना पड़ेगा। तो अगर ऑप्शन ए को हम सोचें, इट्स न्यूटन अपॉन मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर अगर आप सोचें तो ये बन रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आप लोग समझते हैं ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड बन रहा है? तो क्या ये सही है? हरगिज़ सही नहीं है। तो इसका मतलब हमने इसको क्रॉस कर दिया। उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, इट्स न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर इनटू सेकंड। क्या ये ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं, इट्स किलोग्राम अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप न्यूटन को भी ब्रेक करके सोचें तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर बन रहा है, तो ये बन रहा है किलोग्राम m-1 s-2। दो तरह से मैं इसको सोच रहा हूँ, बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स की टर्म में। अब इसको जरा सोचते हैं तो ये आपके पास बन रहा है किलोग्राम m-1, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये s पावर नहीं -2 क्यों लिखा है, +2, ये -2 पर हो जाएगा। ये टाइम का स्क्वायर है ना, s के ऊपर स्क्वायर है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये s -2 हो जाएगा। इज इट सिमिलर टू दिस वन? सिमिलर हो गया काम, यही ऑप्शन बन गई हमारी। नीचे वाली ऑप्शन को भी सोचते हैं, ये बन रही है बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये बन रहा है किलोग्राम m-1 s⁻²। So this option is incorrect, this option is incorrect, our correct option is C option. So the answer for this question is C. I hope जब भी मैं क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ आप पॉज करते होंगे वीडियो को, और पॉज करने के बाद आप इनको अटेम्प्ट करते होंगे और दोबारा उसको रीचेक करते होंगे। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। So in this question, the SI unit of specific heat capacity are joules per kilogram per Kelvin. What is the unit of specific heat capacity expressed in SI base units? आपने इस joules per kilogram per Kelvin को SI base units में ब्रेक करना है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। joules per kilogram per Kelvin, इसको SI बेस्ड यूनिट्स बनाते हैं। तो जूल्स है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू दिस किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो क्या रह गया बेटा, m स्क्वायर s-2 k-1। देखें एक चीज़ मैं आपको याद कराऊँ, जूनियर क्लासेस में 6th-7th में जब आप अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे तो आप जैसे फर्ज करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ a स्क्वायर इंटू a क्यूब। व्हेन द बेस इज सेम पावर्स आर सिंपली एडेड, ये रूल होता था अलजेब्रा में। तो ये बन जाएगा a पावर 5, दोनों को ऐड कर दिया। अब जरा सोचें आप, ये है किलोग्राम, इस पे पावर है +1,
ये है किलोग्राम इनवर्स, इस पे पावर है -1. नाउ द बेस इज सेम यानी किलोग्राम, बट यू डू द पावर्स आर सिंपली एडेड. तो बेटा इसकी पावर क्या बनेगी? इसकी पावर बनेगी किलोग्राम रेज टू पावर 0. एनीथिंग पावर 0 मीन्स 1. जी किसी भी चीज जिसकी पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैंसिल आउट होके 1 बन गया. व्हाट इज लेफ्ट? मीटर स्क्वायर S-2 केल्विन इनवर्स. तो मीटर स्क्वायर S-2 केल्विन इनवर्स इज द सी ऑप्शन. तो इसका मतलब ये है कि अब आप मल्टी डायमेंशन में, मैंने ये 5 क्वेश्चन जो थे ये मल्टी डायमेंशन में आपको मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है इस सेशन में कि आप यूनिट्स के क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं. मैं एक सेशन और यूनिट्स के ऊपर करूंगा काम. एक सेशन में 5 और 10 क्वेश्चंस और हम अटेम्प्ट करेंगे. फिर मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा इंशाल्लाह, और उस वर्कशीट में फिर आप लोग प्रैक्टिस करके फिर आप लोग मुझे अपनी क्वेरीज बताइएगा, तो हम उसको ऑनलाइन सेशन रखकर उसमें उसको सॉल्व करेंगे. अप टिल नाउ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.